हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम थर्मोडायनामिक्स का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देख ले, फिर आप सेकेंड पार्ट देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो पहले तो ये पढ़ेंगे कि इस लॉ का नाम जीरोथ लॉ क्यों है। सो इट वाज फॉर्मुलेटेड मच लेटर देन फर्स्ट लॉ, बट बिकॉज ऑफ इट्स प्राइम इंपॉर्टेंस इट वाज नेम्ड एज जीरोथ लॉ, क्योंकि जीरोथ लॉ से ही टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट पहले समझाया जाए, उसके रिलेटेड जो भी टर्म्स है उसको पहले पढ़ाया जाए, इसीलिए इस लॉ का नाम जीरोथ लॉ हुआ, ताकि फर्स्ट लॉ से पहले जीरोथ लॉ पढ़ाया जाए और उसके रिलेटेड जो भी टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है और जो भी टर्म्स है वो सारे चीजें इंट्रोड्यूस किया जाए। राइट, नाउ कमिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ। So we will explain this with an illustration. So coming to the statement, it goes as if two bodies, say A and B, you can see in the illustration A and B, two different bodies, they are in thermal equilibrium with another body C. So this is the another body. Now first we will understand what is thermal equilibrium. So two bodies are said to be in thermal equilibrium when they are present at same temperature. That is, there is no heat flow occurring between them, no exchange of heat occurring between them. At that stage, it is said to be in thermal equilibrium. Now coming back to the statement, it is saying that A is in thermal equilibrium with C. Also, B is in thermal equilibrium with C. So, when these two bodies, that is A and B, will be brought in contact, they will also be in thermal equilibrium with each other. Right? So now we can see A and B are brought in contact and they are also in thermal equilibrium with each other. If we explain it in simpler terms, we can say that A and B are at equal temperature with C. That is, A and C are at the same temperature, which also means that A and C are at thermal equilibrium. Also, B and C are at equal temperature. That means B and C are also in thermal equilibrium with each other, thus explaining the first line of the statement. Now, if A and B are brought in contact, they will also be at same temperature. That means A and B will also be in thermal equilibrium with each other, thus explaining the second line of the statement. Simple. अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से इस लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। Measuring body temperature with thermometer. Now when thermometer is brought in contact with the body, then first the glass wall of thermometer attains thermal equilibrium with the body temperature. Right? Next what happens? Next the glass wall attains thermal equilibrium with mercury of thermometer. Right? Now at this stage, body is also in thermal equilibrium with glass wall of thermometer and mercury is also in thermal equilibrium with glass wall of thermometer. Correct? As a result of which, body and mercury are in thermal equilibrium with each other. That is, they are at same temperature. Thus, the reading that will be shown in thermometer is the exact reading of the temperature of body. Correct? And in this manner, we can measure the body temperature with thermometer. Fine. Coming to utility of the law. Suppose we want to measure temperature of
two different objects, A and B. Suppose A is a lake and B is a river. We want to measure temperature of water of lake A and river B. Now we found that the temperature of lake A and river B are same, right? That means there will be no heat flow between them. That is, when the water of lake and river will come in contact, they will be already in thermal equilibrium because they are at same temperature. So this law gives us an idea about temperature, which gives us an idea about the measure of thermal equilibrium. Correct? Also, it gives us an comparative idea about temperature of different systems, different objects. That is about degree of hotness of different objects. That is, which object is at a higher temperature, which object is at a lower temperature, what will be the direction of heat flow, at what point thermal equilibrium will be attained, and if two objects are at same temperature, then they are already in thermal equilibrium. So all these concepts are developed from zeroth law, right? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी. इसका यूटिलाइजेशन हमें फर्स्ट लॉ में पता चलेगा. तो पहले देखते हैं व्हाट इज इंटरनल एनर्जी. So a fixed quantity of substance has a fixed amount of energy, and this energy is due to the energy possessed by its constituent molecules. This fixed energy by a substance is called the internal energy or intrinsic energy of the substance, right? Thus, internal energy is the sum of kinetic energy of the particles and the potential energy. Now, what are the contributing factors for the kinetic energy? They are translational, vibrational, and rotational energy of particles. And what is the contributing factor for potential energy? It is the intermolecular forces. Thus, we can write internal energy denoted as U as the sum of kinetic energy E and potential energy V. But हम इंटरनल एनर्जी का कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू जानना है तो हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यूज पता होने चाहिए. बट इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल एनर्जीज इंडिविजुअली. ऑल्सो फॉर पोटेंशियल एनर्जी वी नीड टू मेजर द न्यूक्लियर एनर्जीज, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज. So it is not possible to know their exact values. So अगर इनके ही exact values नहीं पता चलेंगे तो internal energy के तो exact value हमें नहीं पता चल सकता. So what can we measure? We can measure the change in internal energy, delta U of the system. And how we can measure that? We can measure that when system goes from initial state having internal energy Ui at the initial state to final state with internal energy UF at the final state, right? अब ये change in internal energy delta U हमें क्या information देगी? It will tell us about the energy exchange between system and surroundings. That is, if energy is coming into the system, that is, if energy is absorbed by the system, or if energy is going out of the system, that is, energy is being released by the system. और हमें पता है एनर्जी एक्सचेंज किस फॉर्म में होता है? हीट और वर्क के फॉर्म में, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है, राइट? सो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज गिवन एज द डिफरेंस ऑफ यूएफ, दैट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट, माइनस यूआई, दैट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द initial state. Now, for delta U to be negative, Ui must be greater than Uf, right? And तब क्या होगा? Energy will be
released by the system, that is energy is going out of the system, right? For delta U to be positive, UF का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए UI से, right? And at that point energy will be absorbed by the system, that is energy is coming into the system. अब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहां आप देखोगे कि हीट आइदर अब्सॉर्ब होता है और रिलीज होता है. तो हीट जहां रिलीज होता है वैसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं. अब जहां हीट रिलीज हो रहा है वहां पे क्या होगा, जो इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट होगा. फाइनल स्टेट क्या होगा, प्रोडक्ट्स. इसका मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स जो होगा वो इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल से कम होगा, तभी एनर्जी वो रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट. और जिन रिएक्शंस में हीट अब्सॉर्ब होता है, जिनको एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, उनमें क्या होगा, उनमें इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल, राइट? और तब एनर्जी अब्सॉर्ब होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, करेक्ट? अब इंटरनल एनर्जी के कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं. So internal energy is an extensive property. Now what are extensive properties? So the properties that depends upon the quantity of the substance. Now हमने पहले ही पढ़ा कि a fixed quantity of substance will have a fixed amount of energy. Thus internal energy will be an extensive property. Next is internal energy is a state function. Now what are state functions? So the thermodynamic properties whose value will depend only on the initial and final state of the system and not how the states has been achieved or via which path the process has been achieved. So इसको हमें example के through समझते हैं. Suppose we need to synthesize carbon monoxide gas. अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तो हम बहुत सारे मेथड से जनरेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने बस 2 ही मेथड्स दिए हैं, बट ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिससे आप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जनरेट कर सकते हैं. बट 1 मोल ऑफ CO गैस एट STP विल ऑलवेज हैव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, राइट? तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का एक पर्टिकुलर अमाउंट ही इंटरनल एनर्जी होगा, and it will not depend on which path the CO gas has been formed. कौन से प्रोसीजर से, कौन से मेथड से CO gas जनरेट हुआ है, उस पे वो बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा. That is why internal energy is a state function. Next is internal energy is a function of temperature, which is written as U is equals to function of T for ideal gas only. अब आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा कि इंटरनल एनर्जी U विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी E, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस के लिए 0 होता है. बिकॉज फॉर आइडियल गैस वी नो दैट देयर आर ओनली इलास्टिक कोलिशंस, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इन आइडियल गैसेस, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच पोटेंशियल एनर्जी इज 0. thus internal energy U is equal to kinetic energy E. So in many places you will see that internal energy is often denoted as E. This is because of this reason. Now we know that kinetic energy is a function of temperature. हमने ये सुना ही है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, that is it is directly proportional to temperature. So as a result of which internal energy will also depend on temperature. Thus higher temperature means that internal energy of the substance will also be greater, right? So internal energy will be a function of temperature for ideal gas. अब isothermal process in case of ideal gas के लिए delta U 0 होता है. क्यों? Because we know U is a function of temperature, as a result of which delta U will be a function of delta T. Now we know for isothermal process temperature is constant, so delta T will be 0, as a result of which delta U
will also be 0. Correct? अब जो अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक पे जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करेंगे, आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम और हार्ड वर्क करें, हमें एक बूस्ट मिलेगा कि और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आप तक लेके आए, मतलब एकदम बेहतरीन वाला कंटेंट। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाए, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दे। और इस बार मैं आपको टारगेट दे रही हूँ कि हेल्प अस अचीव 500 सब्सक्राइबर्स, ठीक है? सो यू लीड अस टू आवर टारगेट एंड वी विल लीड यू टू योर टारगेट। सो कर दिए चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? लेट्स फाइंड आउट। सो द स्टेटमेंट फॉर फर्स्ट लॉ गोज एज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू फर्स्ट लॉ को समझने की कोशिश करता है। नाउ सपोज यू आर कंज्यूमिंग फूड। सो आप फूड कंज्यूम क्यों करते हो? सो दैट यू गेट एनर्जी टू डू सम वर्क। इसका मतलब द केमिकल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन योर फूड is getting converted to kinetic energy while you are performing the work. अब plants क्या करता है? Plants use the light energy from sun just to perform photosynthesis. That means light energy is getting converted to chemical energy. Correct? अब simple terms में क्या बोल सकता है? That energy cannot be generated without consuming energy of some other kind. मतलब अगर आपको कहीं पे एनर्जी जनरेट होता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रॉय भी हुआ है, कंज्यूम हुआ है, राइट? मतलब ऐसे कहीं पे एनर्जी जनरेट नहीं हो जाएगा या ऐसे कहीं से एनर्जी डिसअपियर नहीं हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे एनर्जी डिसअपियर होता हुआ दिख रहा है तो वो कहीं ना कहीं जनरेट हुआ है। सिमिलरली अगर कहीं पे आपको एनर्जी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी destroy भी हुआ है। So we can say that the total energy of universe, that is system and surroundings को मिला के जो हमारा यूनिवर्स है उसका एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, राइट? क्योंकि एनर्जी एक्स्ट्रा कहीं पे जनरेट नहीं होगा या कहीं से एनर्जी गायब नहीं हो जाएगा, वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एंड दैट इज व्हाई दिस लॉ इज सेड टू बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आप कोई भी एग्जाम्पल सोच लो। सपोज आप फोन में म्यूजिक सुन रहे हो तो वहां पे क्या होता है? दैट द केमिकल एनर्जी ऑफ योर फोन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी। अब आपके घर में लाइट्स ऑन है तो वहां क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी। तो हमेशा यही होगा कि कहीं ना कहीं एनर्जी डिस्ट्रॉय होगा और उसी का इक्वल अमाउंट कहीं पे जनरेट होगा। दैट इज एनर्जी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर and the total energy will always be conserved, will always be constant, right? Now coming to mathematical expression of first law. So let us assume a system having internal energy U1, right? Now it absorbs certain amount of heat energy Q. So what will be the internal energy now? Internal energy will be equal to U1 plus Q. Correct? Next, W amount of work is done on the system, right? So, what will be the final internal energy of the system? It is U2. So, final internal energy U2 can be written as U1 plus Q plus W, right? So we can write this in this manner. U1 can be brought in this side. Correct? Now U2 minus U1 is equal to delta U, right? Which is equal to Q plus W. So I have numbered this equation as 5. So don't get confused. I have numbered this as 5 because we had the numbering from 1 to 4 in our first lecture for the equations that we have obtained in our first lecture. So
In continuation to that, I have numbered this equation as 5. Okay, so we can say change in internal energy is equal to heat absorbed plus work done on the system. Please note that we have used positive sign for work done because we know as per the sign convention, work done on the system is positive. Correct? Now this is the expression that we have obtained in our previous slide. Now let change in volume be delta V at constant pressure P. Then what will be the expression for PV work? This is the equation which we have obtained in our first lecture, that is W is equals to minus P delta V. Now if I consider that there is only PV work, then we can write the value of W in the equation 5. So what will happen to equation 5? It can be written in this form, that is delta U is equals to Q minus P delta V, right? Now for isothermal, irreversible and reversible expansion of ideal gas, delta U is equals to 0. This we have seen in our previous slide that for isothermal processes in case of ideal gas, delta U is 0, correct? So if delta U gets 0, what will happen to equation 5? It can be written in this form, that is Q is equals to minus W, right? So for isothermal irreversible change, we can write it in this manner, that is Q is equals to minus W. Now we know W irreversible equals to minus P external delta V. So if we put the value of W in this equation, we will get this, right? Since we have a negative sign outside, this will give you a positive value, that is Q is equals to P external delta V. Similarly, for isothermal reversible change, again Q is equals to minus W, right? Again, what is the value for W reversible? Minus 2.303 nRT log V2 by V1. We have a negative sign, so this will give you a positive value, that is Q is equals to 2.303 nRT log V2 by V1, correct? Now for adiabatic change, Q is equals to 0 because we know in adiabatic processes there is no exchange of heat. Now again coming to equation 5, if Q is equals to 0, delta U is equals to W, correct? So we can write delta U is equals to W adiabatic, where W adiabatic is the work done in adiabatic processes, correct? Next is for isochoric process. Now we know in isochoric processes there is no change in volume, that is delta V is equals to 0. Now if delta V is equals to 0, we will use this expression. So if this value gets 0, delta U is equal to Q, right? That is, we can write it as delta U is equals to QV, where QV means heat supplied at constant volume, since it is a isochoric process. Fine. Now coming to the statement that heat and work are path functions, whereas change in internal energy, which is actually the sum of heat and work, is a state function. So first we will prove that heat and work are path functions. So let us consider a system going from initial state A to final state B by 3 different paths, 1, 2 and 3. So in path 1, you can see that while the system goes from point A to point B, pressure and volume are changing simultaneously. In path 2, first the volume remains constant and then the pressure remains constant while the system is going from point A to point B. In path 3, first the pressure remains constant
and then volume remains constant while the system is going from point A to point B. Also you can see that the initial state is same in all the three paths. Also the final states are same, right? Now work done is actually the shaded portion of the diagrams. So as you can see from the diagrams, the shaded portions are different in the different paths. That is, the area under the curves are different. So work is different in different paths. So we can say work is a path function. Now suppose a system has to go from point A to point B. So it can go in any process, be it be isothermal, isobaric. But in all the processes, work done will be different because we know work done is a path function, right? So in all the different process, since the path will be different, work done will also be different, correct? Now coming to the equation 5. So this is the equation 5, which can be written in this manner also. That is, Q is equals to delta U minus W, right? Now we know delta U is a state function. This we have read in the features of internal energy. So since the initial and final states are same in all the different paths, the change in internal energy will also be same, right? Because it is a state function, correct? But work done values are different, right? So let us assume that delta U has a value of 5 in all the three different paths because the initial and final states are same. So delta U value will be same, right? Now let us assume that for path 1, work done has a value of 10. For path 2, work done has a value of say minus 12. And for path 3, let us assume that work done has a value of 20. Now let us find out the value of Q. So for path 1, it is 5 minus 10. That is minus 5. For path 2, it is 5 minus 12. That is 5 plus 12. That is 17. Again in path 3, it is 5 minus 20. That is minus 15. So in all the three different paths, we have got different Q values, right? So since the Q values are different in different paths, we can say Q is also a path function just like work, right? Now let us prove the statement that change in internal energy is a state function. So let us consider a system with internal energy U1 in initial state A, right? Now the temperature and pressure are changed such that following path 1, the system reaches final state B, and at B, the internal energy is U2. Next, the system returns from B to the initial state A via path 2. Then we can say that the change in internal energy in path 1 and path 2 must be equal in magnitude. Why? Because if the energy change in path 1 and path 2 are not equal, suppose energy change in path 1 is greater than energy change in path 2. So let us assume that delta U value in path 1 is 15, whereas in path 2 delta U value is 10. Now as the system has gone from point A to point B via path 1 and then again it has come back to point A via path 2, the original state has been restored, right?
So if the energy values are not same, that means some energy has been created which actually violates the first law. That is, energy cannot be created if not an equal amount of energy is destroyed somewhere else, right? So energy change value cannot be different in different paths. It has to be same, correct? So energy change from point A to point B, either from path 1 or from path 2, must be equal, right? So we can say delta U, change in internal energy, is actually a state function. It will depend only on the initial and final state, and it will not depend on the path by which the process is carried out. That is, it will be path independent, correct? अब मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट रिव्यू दे दिया है, कह सकते हो कि एक ब्रीफ दे दिया है वो सारे इक्वेशंस का जो हमने पहले लेक्चर में और आज के लेक्चर में डिराइव किए हैं। तो पहले लेक्चर में हमने तो पहले साइन कन्वेंशंस पढ़ा, हीट एंड वर्क का क्या होता है, फिर हमने पीवी वर्क का जनरलाइज्ड इक्वेशन डिराइव किया जो कि वर्क डन ड्यूरिंग इरिवर्सिबल एक्सपेंशन भी यूज होता है। फिर हमने वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का इक्वेशन डिराइव किया। तो यहाँ तक तो हो गया पहला लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने क्या क्या किया? हमने आज के लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन डिराइव किया, उसके बाद उसको रिलेट करके हमने बाकी सारे प्रोसेसेस के इक्वेशंस डिराइव किए। तो ये वही सारे इक्वेशंस है जो यूज करके आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं यहाँ तक वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे, प्लस कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एंड दैट क्लास विल बी कंडक्टेड बाय श्वेतांग सर। सो यस, स्टे कनेक्टेड। और आज के लेक्चर का आपको पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा एंड समझ आया अच्छे से तो प्लीज लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। नीचे कमेंट्स में लिखे कि आपको क्लियर समझ आ रहा है कि नहीं, एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर दे। मिलते हैं, ध्यान रखें, पढ़ाई करें एंड टेक केयर, बाय।